चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी। लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन कि सेट होता क्या है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसी चीज को जब हम मैथमेटिकल वे में लिखते हैं तो उसे हम सेट बोलते हैं। सो सेट मतलब कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेट बनाती हूँ ऑफ फूड तो इट विल बी लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, pasta, and this goes on. So this is a set of foods like pizza, burger and pasta. तो इस ब्रैकेट के अंदर मैंने सबको ऐड कर दिया. All right. Now let me make a set of toys. It's like beer, car, toy, what it could be, doll, and something like this. So this is a set of items like beer, car, doll, or etc. It can be anything. Got it? So set is a collection of objects. Like यहाँ फूड आइटम्स का सेट था, यहाँ टॉयज का था कि मल्टीपल टॉयज को एक ब्रैकेट के अंदर कोमा से सेपरेट करके डाल दिया. दैट इज अ set, collection of toys, collection of food items. So this is known as a set. Set की एक कंडीशन है कि सेट के अंदर ना डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बार सेट में पिज़्ज़ा लिख दिया सो यू कैंट राइट पिज़्ज़ा अगैन. अब कोई और फूड आइटम हम इसमें लिखेंगे. सो दिस इज अ कंडीशन ऑफ सेट कि इसके अंदर डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी. Got it? Alright, now moving ahead with the first question कि make a set of the values जहाँ पे values जो हैं that are more than 0 and less than 6. more than 0 values चाहिए and less than 6 मतलब कि 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है, 1 से 5 तक जाएंगे बिकॉज द वैल्यू शुड बी मोर देन 0 एंड लेस देन 6. सो वी कैन राइट इट एज सेट का कोई भी नाम होता है, लाइक आई एम गिविंग अ नेम ए टू इट, देन गोना राइट इक्वल टू, देन curly brackets, then 1 separated by comma 2, 3, 4 and 5, and this is a set. Got it? Now let's study about notations. Notations यही है कि सबसे पहले आप कोई भी सेट का नाम दोगे. It can be anything like A, B, C or whatever. Then curly brackets आएंगे. Curly brackets के अंदर आप different elements और objects को लिखोगे and which is separated by commas. Alright, now moving ahead, these are your circle brackets or we can say them as round brackets. So round brackets में दो things जाती हैं जिनकी starting and ending point हम लिखते हैं. Like if you write anything in circle brackets, like I write 1, 3, then remember one thing कि ना ही question में 1 included है और ना ही 3 included है, but it includes the range of the values कि इसमें 1.1, 1.2 and this goes on till 2.8, 2.9 ये सब included है. but जो number 1 है और जो number 3 है ये included नहीं है. It includes the range but not the number itself. Like if I write 2,9 तो 8.9 तक जाएंगे लेकिन 9 नहीं होगा. We'll start with 2.1 लेकिन 2 नहीं होगा. ठीक है, तो सर्कल ब्रैकेट का, राउंड ब्रैकेट्स का इट्स अ रूल दैट यू विल इंक्लूड द रेंज बट नॉट द नंबर इटसेल्फ. लेकिन अगर इसकी जगह वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स तो हम नंबर्स को भी इंक्लूड करेंगे. लाइक इट्स लाइक 1,3 तो इसमें 1 भी इंक्लूडेड है और 3 भी इंक्लूडेड है एंड इट इंक्लूड्स नंबर बिटवीन देम टू. Like 1.1, this goes on until 2.9 and even 1 is included and even 3 is included in square brackets. So this is a core difference between round brackets and square brackets. Got it?
सो नेक्स्ट थिंग कम्स कि हमने पढ़ा कि सेट के अंदर ना वी आर यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स. कर्ली ब्रैकेट्स वो होता है जिसके अंदर डिस्क्रीट वैल्यूज जाती हैं. Like if I write something in curly brackets like 1 2 3, तो इसका मतलब है इसके अंदर 1 2 और 3 यही तीन वैल्यूज जो है वो जा सकते हैं. लाइक इफ आई राइट लाइक ऐसे 1 3, तो इसका मतलब है 1 और 3 डिस्क्रीट वैल्यूज ओनली. लेकिन इफ आई राइट इट इन स्क्वायर ब्रैकेट और इधर आई राइट इट इन सर्कल ब्रैकेट्स, तो इसका मतलब है कि it includes the range. It's like 1 1.1 and goes on till 2.9 and 3, and here it's like 1.1 and goes till 2.9. ठीक है. तो the thing is very much simple that in the curly brackets you are including the discrete values, whereas in the square brackets or in the circle brackets you are using or showing the continuous values. Got it? So now let's move to the another question which says make a set with all the numbers greater than 0, also prime number and less than 10. हमें सेट बनाना है उन नंबर्स का which are greater than 0 and less than 10. Okay, it's 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Less than 10 तक जाना है. And now it should be a prime number also. So it's 2, it's 3, it's 5 and it's 7. So we're gonna write it in curly brackets. We'll give a name to the set, then write like 2 separated by comma, then 3, then comma 5, then comma 7, and this is how we created the set. Alright, now we can also write it in another form. It's like a is equal to x, and these are your values of x. Okay, so you're gonna write it like x belongs to, x is a prime number which is less than 10. Also you can express as x is a prime number and x is greater than 0 and less than 10. You can also write like this. Got it? Or you can write like a is equal to, x belongs to, x is only divisible by 1 and number itself, basically the property of another way of writing the prime numbers, and x belongs to a natural number and x is less than 10, because natural number of course starts from 1 only, and this will go till 9 because x is less than 10. And now you want to see the number which are divisible by 1 or number itself, so it's 2 3 5 and 7 only, and this is how you can also express your sets. Got it? Now what do this sign means? Like we wrote x belongs to n, so this signs means to belongs to, कि x जो है वो एक नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब होता है इट बिलोंग्स टू समथिंग. लाइक अगर मेरे पास एक सेट है, इट्स लाइक 1 2 3 4 and 5, सो हियर आई कैन से कि जो 5 नंबर है दिस बिलोंग्स टू a, मतलब वो उसका पार्ट है, तो 5 बिलोंग्स टू a और इज इन द पार्ट ऑफ a. Got it? Okay. Moving ahead with the question कि a हमारे पास एक सेट है और उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 and 5, and b is another set which has elements 4 5 and 6. So here the first question says that what is a union b? This is a sign of a union. Union का मतलब होता है that you have to include everything, like you have to take away everything out there. So it's like you're gonna take all the items of A and all the items of B as well. So it's like 1 2 3 4 5, and we know that
जो सेट होता है उसके अंदर डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं. मतलब यू नॉट गोना टेक द थिंग्स जो बी में भी हैं. यू नॉट गोना टेक द 4, यू नॉट गोना टेक द 5 बिकॉज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन ए, सो यू विल टेक 6 only. And this is the value of A union B. मतलब take all the values of E set and B set, but the values should be discrete only. Second sign come is A intersection B. Intersection means कि जो भी चीजें A और B दोनों में common है, that is written in intersection. So it's like in both of them 4 and 5 is common, right? You write the common things in intersection. So in this 4 and 5 is same, and 4 and 5 is same as well as here also. So you're gonna write A intersection B is 4 comma 5. Got it? Alright, now let's move ahead with one of the most important topic of sets, that is Venn diagrams. Venn diagrams. Alright, let's understand the funda कि पहले union, intersection, then universal sets इनको represent करते कैसे हैं, so that when we move ahead with the questions of Venn diagrams तो हमारे basics गलत ना हो. So it's like अगर A हमारे पास एक set है with the elements 1, 2, 3, 4 and 5, and B एक set है हमारे पास with elements 4, 5 and 6. Okay, so see one thing कि A एक हमारे पास set है and it has elements 1, 2, 3, 4, 5, and B हमारे पास एक set है जिसके elements है 4, 5 and 6. Right? Now can you see one thing कि दोनों ही sets में 4 और 5 are common. If this is your universal set, this is your A set, and this is your B set. So here only 1, 2 and 3 element is different in A, and only 6 element is different in B. Rest 4 and 5 is similar in A set as also and in the B set also. So in A 1 to 3 is different, in B 6 is different, and 4 and 5 is common in both of them. So this is something which is intersecting in them. So we're gonna say कि A ले लो पूरा, B ले लो पूरा. So this is your A union B. Whereas अगर कोई मुझे पूछे इस सेट को देख के बताओगे what is the intersection, like what is A intersection B, so that's 4, 5, and A union B will be 1, 2, 3, 4, 5 and 6 because that's union, and this is intersection जो दोनों के बीच में हो रहा है. Got it? Now moving ahead with the another concept of number of elements in a set. For example, अगर मैं एक set देती हूँ कोई भी बना लो, it's like let's take the toys only, beer, Hot Wheel cars, and now gonna take a doll. So how many number of elements are there in this particular set? So the number of elements in the A set is equals to 3. Got it? So this is like how we can say कि कितने number of elements हैं एक particular set के अंदर. Now let's understand what is universal set. See, earlier you had studied about the union set and the intersection set, and now we're gonna study about the universal set. Remember one thing, universal set is the biggest possible set in our entire set theory because this is gonna include every other possible thing there, which is a part of something or not a part of something. So this is the biggest possible set. Got it? Alright, let's understand with an example because that is the best way to understand these things. Okay, A है मेरे पास and इसके अंदर हमारे elements हैं 1, 2, 3 and 4. B है मेरे पास जिसके अंदर I'll take 1 and 5.
एंड देन गोना टेक अ यूनियन कि 6 से लेके इन्फिनिटी तक मेरे पास वैल्यूज है, इन्फिनिटी तक है तो वी आर नॉट इंक्लूडिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू, तो यहाँ पर राउंड ब्रैकेट आएगा. So now tell me that what will be the universal set of it. We are including the value 1, 2, 3, 4, 5. Then we are including 6 and this value goes till infinity. And then we are also including 1, 2, 3, 4 also. तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज आती हैं, एंड दैट सेट इज नोन एज अ यूनिवर्सल सेट. I hope you got this. Okay. Now, if in the particular question which you are solving and you have a condition कि मुझे particularly 4 या 5 इनको include ही नहीं करना है, like if I say कि एक set बनाओ like universal set के अंदर और 4 और 5 को नहीं इंक्लूड करना, सो आई विल से कि x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, मतलब कि इट बिलोंग्स टू एवरी वैल्यू, लाइक कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट माइनस करेंगे एंड विल से कि 4 एंड 5 को इंक्लूड नहीं करना है. दीज आर डिस्क्रीट वैल्यू, सो वी गोना यूज कर्ली ब्रैकेट्स. सो इसका मतलब है इंक्लूड एवरी अदर वैल्यू पॉसिबल. Take the universal set which value lies from minus infinity to positive infinity, but don't include 4 and 5. Got it? Now how to draw its Venn diagram, let's understand that. See, when you make something like this, you know like this is A and this is B. Now I told you कि यहाँ जो elements आते हैं ना, that is A intersection B, and if you're gonna take ये सारा, तो ये सारा is A union B. But do you know one thing कि ये सारा is a part of a universal set. This is a universal set. Another thing is this is only A, this is only B, and this is A intersection B, and this entire thing is A union B. This is A intersection B, this is only A, this is only B, and this entire thing is a universal set. I hope you got this. Alright. Moving ahead with another question, and this is a direct question on set, you be able to see in exams. So it's like कि अच्छा, फुटबॉल खेलने वाले 40 बच्चे हैं, क्रिकेट खेलने वाले 60 बच्चे हैं, टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 80 हैं. सो नाउ टेल मी कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो एटलीस्ट एक स्पोर्ट तो खेलते ही खेलते हैं. So see one thing, I make something like this, ठीक है. Now this is what cricket खेलने वाले बच्चे and this is football खेलने वाले बच्चे. Universal set says कि total students कितने हैं, 80 students हैं. Now see one thing, जो फुटबॉल खेलने वाले हैं ना वो 40 बच्चे हैं and क्रिकेट खेलने वाले 60 बच्चे हैं, बट इट इंक्लूड्स वो बच्चे भी जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं. तो कितने बच्चे हैं जो दोनों के अंदर कॉमन है, वी कैन सी कि कितने बच्चे हैं जो दोनों में कॉमन है. सो दैट्स लाइक 20 स्टूडेंट्स का डिफरेंस ना. यू कैन ऑल्सो गो लाइक दिस इज एक्स, ठीक है, इसको x मान लेते हैं. तो क्रिकेट के अंदर x माइनस 60 स्टूडेंट्स, लाइक 60 स्टूडेंट में से हम उनको माइनस कर देंगे, लाइक जो टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं उसमें से x को माइनस कर देंगे जो दोनों खेलते हैं, एंड देन फुटबॉल में से भी x को माइनस कर देते हैं. सो इफ यू विल ऐड देम आउट, यू गोना डू लाइक 40 माइनस x प्लस x प्लस 60 माइनस x, सो दिस इज इक्वल्स टू 80. तो 100 minus x is equal to 80 and hence x is equal to 20. So one thing you need to understand now, if this is what we made now, and now you know ये तो 20 है,
ये क्रिकेट प्लेयर्स थे, फुटबॉल प्लेयर्स थे। क्रिकेट प्लेयर्स कौन है? 60 माइनस एक्स, तो 60 माइनस 20, 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों खेलते हैं, एंड सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले वी हैव 20 स्टूडेंट, बिकॉज 40 माइनस 20 दैट्स 20 ओनली, and 40 plus 20 is 60, 60 plus 20 is 80, तो hence universal set क्या कहता है कि we have 80 students, only football खेलने वाले 20 बच्चे, only cricket खेलने वाले 40 बच्चे, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाले 20 बच्चे, and that's how you have to do. Got it? अब एक कॉन्सेप्ट आता है डिसजॉइंट सेट्स का। डिसजॉइंट सेट का क्या मतलब है? टू सेट्स जब उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, नथिंग इज इन कॉमन between two sets. Like if this is my one set, I have to use curly bracket, just a second. 1, 2 and 3, and now in B we have 4, 5 and 6. Can you see something common between them? Now just don't say कि brackets common है या फिर commas common है. The values are not common in them, right? So we're gonna say them as disjoint sets. Disjoint sets मतलब दो sets जिनमें कुछ भी common नहीं होता, so they are known as disjoint sets. Okay? Example देती हूँ कि if I say कि फुटबॉल खेलने वाले 40 बच्चे हैं, क्रिकेट खेलने वाले ओनली फुटबॉल खेलने वाले 60 बच्चे हैं, एंड टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास आर 100. तो इफ द टोटल पॉपुलेशन यू हैव इज 100 and out of them the total football players are 40, total only the students who play cricket are 60, लेकिन इनमें कुछ कॉमन है नहीं, तो हेंस इट इज इक्वल्स टू 0. तो इसको हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट सेट मतलब कि जब दो सेट्स के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, तो दे आर नोन एज डिसजॉइंट सेट. All right, moving to the last question for today's series. If we don't know the total number of students, we know, अब क्वेश्चन यही है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो आपको नहीं पता, ठीक है. व्हाट यू नो इज कि फुटबॉल जो गेम है वो 40 बच्चे खेलते हैं, एंड क्रिकेट जो गेम है वो 60 बच्चे खेलते हैं. नाउ जस्ट टेल मी कि व्हाट इज द फुटबॉल एंड क्रिकेट का इंटरसेक्शन, मतलब मुझे बस ये बताओ कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, डोंट नो कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. सी, if I make a graph or what we say diagram of it, this is how the case is. Let it be ये फुटबॉल खेलने वाले हैं, क्रिकेट खेलने वाले हैं. फुटबॉल खेलने वाले 40 बच्चे हैं और क्रिकेट खेलने वाले 60 बच्चे हैं. नाउ टेल मी कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं कॉमन होंगे. They can be 40 only. The reason is कि फुटबॉल खेलने वाले सारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि क्रिकेट में वी हैव 60 स्टूडेंट्स, तो उन 60 में से 20 का तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों के अंदर कॉमन मिल सकते हैं. बिकॉज इन क्रिकेट वी नो कि 20 बच्चे तो ऐसे एडिशनली एक्सेप्शनल लोग हैं जो सिर्फ क्रिकेट ही खेलते हैं. तो क्रिकेट अगर हम मान भी लें, लाइक मैक्स पॉसिबल केस ले लेते हैं कि फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले दोनों के अंदर मैक्स कॉमन 40 स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ फुटबॉल खेलने वाला कोई नहीं है, और सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले ऑफ कोर्स आर एक्सेप्शनल्स, मतलब 20 बच्चे हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं जो दोनों ही गेम खेलते हैं, एंड फुटबॉल खेलने वाले, सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले एक भी स्टूडेंट नहीं है. सो हियर वन थिंग इज दैट कि फुटबॉल जो है वो क्रिकेट का सबसेट है कंप्लीटली, बिकॉज फुटबॉल खेलने वाले सभी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं. गॉट इट? सो नाउ इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, सो नाउ व्हाट यू कैन से 40 plus 20, there will be 60 students in the class.
or if we consider it as a disjoint set, we can consider it as a disjoint set as well. ये कुछ भी कॉमन नहीं है. फुटबॉल खेलने वाले 40 बच्चे हैं, क्रिकेट खेलने वाले 60 बच्चे हैं, कॉमन इनमें कुछ भी नहीं है. तो हेंस 100 बच्चे हो जाएंगे. तो योर आंसर विल लाई बिटवीन 60 स्टूडेंट्स अगर सारे ही फुटबॉल खेलने वाले क्रिकेट खेलते हैं, और अगर बिल्कुल ही अलग हैं तो योर आंसर कैन बी 100 ऑल्सो. ऑल राइट, सो योर आंसर lies either this or either this. Anything can be your answer. It depends. Like you consider every football player to play cricket, so your answer will be equals to 60. And if you take it as a disjoint set कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं रखना और लाइक इंटरसेक्शन 0 रखना है, तो hence your answer will be 100. And this was all about the topic set theory. Thanks for watching.